अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने पढ़ना है ना वो है हेल्थ एंड द डिज़ीज़, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड द डिज़ीज़। तो बेसिकली व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ जस्ट according to this action, it is a state of the complete physical, mental, social well-being and the ability to function, and not merely the absence of the disease or infirmity but also the ability to lead a socially and economically productive life. Okay, WHO definition has been criticized because the health cannot be defined as a state. It is a dynamic process. So, health is simply a complete set of physical, mental, and social well-being and the ability, not merely the absence of the disease, but or infirmity. Sorry, it is a complete set of physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. This is the simplest definition of the health. Health is a dynamic process. It is not a state. Okay, there are certain factors and the dimension are simply these: the physical, mental, and social well-being. The factors that can affect the health are general factor we will discuss inshallah. Okay, but now operational definition of health. By WHO definition, the direct measurement cannot be made. Okay, according to WHO, health, what is health? A condition or the quality of human organism expressing the adequate functioning of organism in given condition, genetic or environmental. सिंपली WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि क्वालिटी होनी चाहिए ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की, वो कि वो अपने ना जो फंक्शन है ना गिवन कंडीशन में वो अच्छे से परफॉर्म कर ले. दिस इज़ बेसिकली अ हेल्थ. Okay, by this definition, health means no obvious evidence of disease or several organs of the body are functioning adequately. This is by this definition. Okay, operational definition help us to identify the disease, to measure how many people are suffering from the disease, and distinguish healthy from the disease one. Now, what is infirmity? It is simply a weakness or the feebleness or whatever. Okay, disease. Now, before starting the disease, let's discuss the health in a detail, the dimension and the certain factor. So the dimensions of the health are simply physical, mental, and the important are social. These three are the main dimension of the health. And the emotional and spiritual vocation. Emotional and spiritual is basically related to the mental, and vocational is basically related to job and the work, etc. Okay, let's discuss the dimension first. So dimension of the health. Dimension of the health, physically dimension. अगर ओके हमें पता है फिज़िकली, वैसे जनरल अगर बात की जाए तो फिज़िकल में क्या होता है कि हम अच्छे से काम कर सकें, फिज़िकली फ़िट हों. तो यही होता है कि हमारे बॉडी का हर ऑर्गन और सेल अच्छे से काम कर रहा हो. दिस इज़ बेसिकली अ फिजिकल डायमेंशन. ओके, द स्टेट ऑफ द फिजिकल हेल्थ मीन परफेक्ट functioning of the body. It conceptualizes the health biologically as a state in which every cell or every organ is functioning at a optimum capacity and is in a perfect harmony with the rest of the body. This is the physical dimension. Now, what are the signs of physical health? Good complexion, clear skin, bright eyes, and the smart, good physique, good appetite, and sound sleep, regular activity of bowel, our organ are of normal size and function normally. Simple physical dimension, it include अच्छा दिखता हो, उसकी साफ़ सुथरा हो. हम वैसे भी तो देखने में भी तो वही अच्छा लगता है ना, जो अच्छा दिखे, साफ़ सुथरा रहता हो, उसकी गुड फिजिक हो. और फिज़िकली हेल्थ में हम लेते हैं कि उसकी जो एपिटाइट है वो सही है, उसको भूख वगैरह सही लगती है, और स्लीप वेक साइकिल ठीक है, बाउल हैबिट्स ठीक है. एंड दैट इज़ इफ अगर सब कुछ नॉर्मल है तो बेसिकली वो फिज़िकली फिट है. अब मेंटल डायमेंशन में क्या आता है कि मेंटल डायमेंशन इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड. And the second thing, a state of harmony between oneself and other. And third thing, coexisting between the realities of the self and that of the other people and that of the environment. अच्छा, ये है कि उसको ना मतलब एक पीस हो, एक बैलेंस हो अपने और इन्वायरमेंट में और दूसरे लोगों के दरमियान. सिंपल ये होती है हमारे पास मेंटल हेल्थ.
और इन दिस लाइन वही जो बीएस में कॉन्सेप्ट था पहले, बीएस में हमने थर्ड ईयर में किया भी है कि माइंड एंड द बॉडी आर नॉट द सेपरेट थिंग, एनी डिजीज़ ऑफ द माइंड अल्टीमेटली इफेक्ट द बॉडी। अच्छा, तो यही है कि फ्यू डेकेड्स अगो दे कंसीडर द बॉडी एज इंडिपेंडेंट, body and the mind consider independent entities, but now they are interconnected. We already know this. Emotional dimension is basically related to feelings. Mental dimension is related to knowing on the cognition, and the emotional to the feeling. Now social dimension अगर आम अल्फाज में बात करें तो वो सोशली उसका इंट्रैक्शन हो और उसका एक पार्ट हो सोसाइटी में, वो अच्छा काम कर रहा हो, इसी को हम लेते हैं सोशल। ठीक है, सोशल हेल्थ इज डिफाइंड एज क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल इंटरपर्सनल टाइज एंड द एक्सटेंट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। वो ये है कि उसके दूसरों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं और वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है कम्युनिटी में। दिस इज बेसिकली अ सोशल डायमेंशन। इट इंक्लूड द लेवल ऑफ द सोशल स्किल वन पोसेस, सोशल फंक्शनिंग एंड द एबिलिटी टू रिसीव वन सेल्फ एज अ मेम्बर ऑफ अ लार्ज सोसाइटी। स्पिरिचुअल डायमेंशन ये है कि स्पिरिचुअल हर जो भी किसी का मज़हब वगैरह हो और स्पिरिचुअल हो तो वो उसके सोल और एथिक्स वगैरह और पर्पस ऑफ लाइफ बनाते हैं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ रेफर टू द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल विच स्ट्राइव फॉर द मीनिंग एंड द पर्पस इन लाइफ। इट इंक्लूड इंटेग्रिटी, प्रिंसिपल, एथिक्स एंड पर्पस इन लाइफ। वोकेशनल डायमेंशन इसमें यह है कि जो एक इंसान है वो अपने वर्क से और जो भी उसका गोल वगैरह हो तो वो उससे फुली अडेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस इससे हम लगा सकते हैं कि जब एक बंदे की अचानक से जॉब चली जाए या वो रिटायर होने वाला हो तो फिर उसकी क्या हालत होती है। तो वोकेशनल डायमेंशन आर ऑल्सो important regarding to the health. Part of the human existence when work is fully adapted to human goal, capacity and limitation, work often play a role in promoting both physical and mental health. Importance of this dimension is exposed when individuals suddenly lose their job or faced with the mandatory retirement. Others they are not that much important, but still they affect the health. Philosophical dimension, socio-economical dimension, environmental dimension, educational and nutritional, preventive. They were the dimension of the health. Now the factors that will affect the health is simply the determinants of the health. So they can be the hereditary, they can be the environment, they can be what is the our lifestyle and the socio-economic condition, health services and other factor. अच्छा, तो इसमें यह है कि हेरिडिटरी ये है कि कुछ डिजीज़ हमारे पास वैसे ही जेनेटिक होती हैं इन ओरिजिन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेंटल रिटार्डेशन एक्सेट्रा. Environmental is basically classified as internal and external environment. So internal environment, the environment of our body, inside the body जो भी हमारा environment होगा उसको internal environment कहते हैं. और हेल्दी होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि बॉडी का हर टिश्यू एंड एवरी ऑर्गन शुड बी working in a systematic way. Systematic way meaning that harmoniously within the system. That is simply a internal environment. External environment, the surrounding thing or the environment to which we exposed after conception. Okay, lifestyle. हेल्थ रिक्वायर द प्रमोशन. लाइफस्टाइल में सिंपली यही है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा और बुरी आदतें होंगी, स्मोकिंग, एडिक्शन और पुअर न्यूट्रिशन होगी, पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस नहीं होगी कोई, तो ऑफ कोर्स हम जल्दी बीमार हो जाएंगे और इन्फेक्शियस डिजीज़ को भी प्रोन होंगे. बट इफ़ वी लेड हेल्दी लाइफस्टाइल देन हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी. और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इसमें यह है कि अगर हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं तो हेल्थ भी अच्छी होगी. जीएनपी का मेनली मतलब ग्रॉस न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होता है और इसमें आ जाते हैं कि हमें एजुकेशन मिल रही है, न्यूट्रिशन अच्छी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, तो फिर हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी. हेल्थ सर्विसेज ये है कि हमारे पास पर्पस ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज़ टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन. That is, for example, immunization of the children, safe water supply. So this is basically the responsibility of the health services that they provide the they try to improve the health of the health status of the population. Other factor, food, agriculture. If
industry. Food and agriculture basically related, that if we are eating a healthy and good food, then of course we will be healthy. Or industry, social welfare, rural development. Rural development is important because many diseases are rural in origin. There is a lack of the hospitals and the doctors in the rural areas, so that also affect the health in those areas. Now the general definition: if disease, any disturbance in this dimension or in this condition is a disease. So disease is a departure, subjective or objective, from the physiological or psychological well-being. Simply a disease. Physiological or psychological well-being. Now what is subjective and objective? Subjective mean symptom and the objective mean sign. Subjective symptoms and the objective is a sign. इलनेस ये है कि ये एक फिनोमेना है और ये सब्जेक्टिव इन स्टेट है इन विच इक्विलिब्रियम बिटवीन, मतलब ये है कि इसमें ना जो हमारी बॉडी है और जो हम फंक्शन करना चाह रहे हैं बॉडी एंड इट्स फंक्शनिंग, इक्विलिब्रियम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि इन बंदे को पता होता है कि वो अब बीमार है या वो अनएबल है टू परफॉर्म हिज एक्टिविटीज़ नॉर्मली, तो दैट इज़ अ इलनेस. सिकनेस ये है कि सोसाइटी में फिर जो उसका सोशल डिसफंक्शनिंग होगी ना उसके अनवेल होने की वजह से, दैट इज़ अ सिकनेस. और पर्सन को हम कहते हैं कि वो सही से काम नहीं कर रहा और ऐसे तो सोसाइटी में, तो वो उसको कहते हैं सिकनेस रोल. सिकनेस इज़ अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, द रोल दैट द इंडिविजुअल इज इन व्हेन इल और सिक रोल. ट्रू हेल्थ और पॉजिटिव हेल्थ इज सिंपली कि वो सही से काम करे और सारा कुछ हो. सिंपली हेल्थ इज़ अ ट्रू हेल्थ और पॉजिटिव हेल्थ. An individual who is enjoying the health in all physical, mental and social plans is called a true health or positive health, perfect functioning of body and mind. स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ ये है कि जैसे हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट करते हैं, रेंज करते हैं, वैसे ही स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है. दैट एट वन एंड वी हैव द सब क्लिनिकल और यू कैन से अनअपेरेंट इन्फेक्शन, लाइक दे नाउ हैव द, मतलब उनमें साइन एंड सिम्टम नहीं आते. और अदर एक्सट्रीम पे क्या होता है कि हमारे पास फेटल डिजीज़ हो जाती है. और इन बिटवीन जो रेंज है, इन बिटवीन दीज टू एंड देयर इज़ अ रेंज फ्रॉम, देयर इज़ अ रेंज ऑफ द डिजीज़ रेंजिंग इन स्वीटी, दैट इज़ रेंजिंग इन स्वीटी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर. अच्छा, इसमें उन्होंने एक आइसबर्ग फिनोमेना का बताया हुआ है कि आइसबर्ग फिनोमेना, द कंसेप्ट ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ द डिजीज़. उसमें यह है कि वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास पीक होती है ना, ये इंडिकेट करती है वो क्लिनिकल केसेस जो डायग्नोस्ड हो गए हैं, जो फिजिशियन ने डायग्नोज कर लिए हैं और उनको वो ट्रीट कर रहा है. और जो ये सबमर्ज पोर्शन है ना सारा, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास दोज केसेस हिडन मैस ऑफ द डिजीज़ लाइक लेटेंट, अनअपेरेंट और प्री सिम्टोमेटिक undiagnosed cases and carrier in the community. So this portion include that are not diagnosed by a physician, and this is those that are diagnosed by a physician. The main challenge is to treat this portion. Now determinant we already discussed, and Allah Hafiz.